Good morning, students. Last time we had done letters and emails and paragraph writing. We had finished, right? Yes, writing letters and emails and paragraph writing we had finished. Paragraph writing, I have given you homework. All these 6 topics, I think, to write down a paragraph, right? Now let us move on to lesson 29, writing notices. Now, writing notices, let us learn how to write a notice. Notice is something which you are putting publicly for the attention of a crowd in a given organization or in a school or something like that, right? You want it collectively to bring it to notice to all people around, so that everyone should come to know and the participation should be there. So let us study. The subjects may be different. It can be a school notice, it can be a notice which is placed into an office, it can be a notice which is being published in a newspaper, right? So notice can be of different types. So let us study how to write a notice. Introduction. A notice is a short composition meant to convey a piece of information to some people who could be interested in it. The information should be about an event that has already taken place or is about to take place. Normally is about to take place, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस रखते हैं, राइट? बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हो चुका है और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम नोटिस प्लेस करते हैं. In the near future, it could relate to a cultural event, a concert, a play, a dance performance, etc., a sports event, a meeting, or a birthday, a birth, marriage, death, or etc. Right? Essential features of a notice. Suppose you want to invite students to participate in a charity show your school is going to organize. That information would you have to include? What information you have to include? The purpose of organizing the charity show. क्या purpose है पहले तो charity show organize करने का. The day, date and time of the show. Day, date and time of the show. What is the day? कौन से दिन पे है, कौन से टाइम पे है, कहाँ पर है, वेन्यू भी ज़रूरी है, राइट? देन द वेन्यू. हु विल बी द चीफ गेस्ट, कौन आ रहा है उसको होस्ट करने के लिए, सो दैट वुड बी एन अट्रैक्शन फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट, राइट? एट टाइम्स कोई सेलिब्रिटी को आप इनवाइट कर रहे हो तो उनको मिलने के लिए काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो दैट ऑल्सो इज़ एन अट्रैक्शन. द डेट बाई विच द नेम्स आर टू बी सबमिटेड. कौन से दिन तक आपको उसका लास्ट डेट मेंशन करना है जब जब तक आपको उसका पूरा पार्टिसिपेशन लिस्ट चाहिए. whom the names are to be given to. The signature and designation of the person issuing the notice. Who is issuing the notice? For example, the teacher, the principal, or maybe the in charge teacher of that particular event, or maybe it's possible that someone outside the school or college is coming to organize it, so that person might be the in charge. Or it is possible that the if you are working in an office, the branch manager or the administration manager is taking care of the event. So अगर हेड बॉय या हेड गर्ल होता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो वो भी अपना नाम लिख सकते हैं, राइट? सो दैट डिपेंड्स दैट हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, हु इज़ इन चार्ज ऑफ दैट इज़ टू बी मेंशन्ड इन द नोटिस, ताकि लोगों को पता चले कि अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो किसको कॉन्टैक्ट करने का, राइट? सो दैट शुड बी द इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिस. The signature and designation of the person issuing the notice. Any further information that could be relevant. See the highlighted hints on the page. Given below is a notice about a charity show to be organized in your school. Read it carefully to understand how the notice is written. Now see, कौन सा school का है? Holy Child Public School. It is a notice. Now here the date is mentioned. You consider it as 2020 only. October 17, 2020. The Cultural Society of our school is going to organize a charity show in the aid of the food victims or the flood victims of Odisha and Bihar. The show will be held at 5 p.m. on Wednesday, November 15th, 2020 again. In the school auditorium, Shri S.N. Jain, the Education Secretary, has kindly consented to preside. Kindly consented matlab he is going to be the chief guest of the function. Students interested in participating in the show should give their names to the undersigned in the break latest by October 24, 2020. कौन से दिन को नोटिस लिखा है? 17 अक्टूबर को. 24 अक्टूबर तक आपको लास्ट नेम्स देने और फंक्शन कब है? 15 नवंबर को.
नाउ हियर्स द साइनिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी. कल्चरल सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होंगे, जो टीचर होंगे, उनका साइन है, राइट. सो हु इज राइटिंग द नोटिस? अनुराधा देशपांडे, राइट, अनुभा देशपांडे. Okay, now carefully see the format of a notice from the above example. The information contained in a notice must be complete in all respects. The omission of a single relevant detail might defeat the very purpose of putting up the notice, right? कोई भी एक डिटेल आप लिखना भूल गए तो उसका पूरा पर्पस ये हो जाता है, वेस्ट हो जाता है नोटिस लिखने का. अगर आपने फंक्शन के बारे में लिख दिया, डेट ही नहीं लिखी, तो किसको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कब है? सो दैट इज़ अ big mistake in writing a notice. So be very careful that what details you need to mention in a notice. If you remember to check for why, when, where and include other necessary details, you will be able to write a good notice, right? ये सारे details को याद रख के मेंशन करोगे तो यू विल बी राइटिंग अ गुड नोटिस. बिकॉज ज़्यादा उसमें कुछ कहानी नहीं लिखनी होती है. यू डोंट हैव टू राइट मच मोर इंग्लिश. You just have to state the details, what is the event and why it is there, on what date, which, who can participate in it, all these details are to be mentioned in it. A notice is a formal piece of composition, so it has to be formal in style and must contain only relevant details, right? ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं होती है. It must contain only the relevant details. Now here there are 7 topics given to you for notice writing. As we saw the sample, and we have also done this earlier, last year also we studied this. I have selected 3 topics from the list given. Number 1, Dr. D.K. Sengupta is a renowned educationist, is going to address the students of our school on how to prepare for the annual examinations. As the head girl of your school, draft a notice inviting students of class 6th to 10th to attend the lecture. Right, this is the first topic which I have selected. Then second is, your school is organizing a cultural program on the occasion of the Children's Day. राइट, चिल्ड्रंस डे है. चिल्ड्रंस डे कब आता है? 14 नवंबर को, राइट. बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू, पंडित नेहरू. इट इज़ कंसिडर्ड एज चिल्ड्रंस डे. As the head boy, head girl, draft a notice for the school notice board inviting names for different cultural items, right? Cultural program रखा है चिल्ड्रंस डे की वजह से, तो उसमें किसको पार्टिसिपेट करना है और क्या आइटम्स पेश करेंगे ये इन्वाइट करने के लिए, ये डिस्क्राइब करने के लिए नोटिस लिखना है. And then the 6th one I have selected. It is, your school is organizing a 8-day trek to the Valley of Flowers in Uttarakhand for the students of class 8th. Class 8th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रैकिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है. राइट अ नोटिस इन्वाइटिंग द नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. ऑफकोर्स इसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी. कब है, कहाँ जाना है, कितने दिन का टूर है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा. बिकॉज ट्रैकिंग में ये सब ये आप सारे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं. अगर आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लिखोगे तो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा कि किसको कॉन्टैक्ट करना है इसके रिलेशन में, और कितना उसका फीस है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, राइट. सो हियर वी रैप अप द टॉपिक ऑफ राइटिंग नोटिसेस. नाउ लेट अस मूव ऑन to speech writing. I think we shall move on to, or shall we? Which means we are not doing paragraph writing. We did writing notices. We did writing letters and emails. We did. Okay, fine. This time we have done 3 topics. Writing reports. Yes, writing reports is one topic which is left out. Let us study it quickly. Writing reports. Report writing क्या होता है? जब आप कोई भी, आपको डिटेल्स दी हुई है कुछ मैटर के रिगार्ड्स में, उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखते हो, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक रफ पैराग्राफ जैसा लिखते हो,
तो दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, राइट. दैट रिपोर्ट राइटिंग कैन बी यूज्ड इन साइंटिफिक राइटअप्स ऑल्सो. जैसे आपको कोई ग्राफ दिया है, कोई कंपैरिजन दिया है और उसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइट करने के लिए बोला है, तो वो पूरी डिटेल्स को आप यूज़ करके एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करोगे ग्राफ को देख के कि क्या ट्रेंड है उसके अंदर, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है. ग्राफ को देख करके आपको क्या पता चल रहा है, पाई चार्ट दे दिया है और उसको डिस्क्राइब करना है. सो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, राइट. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. अ रिपोर्ट इज अ description of an event or a situation meant for particular person or a group of persons. Reports about events, accidents, burglaries, matches, etc. are often published in newspapers. They are meant for their readers. Reports of events like the annual day, the sports day, etc. are published in school magazines. Now, newspapers also cover such events. These reports are meant for students and their parents. We also have students' performance reports, sales reports, etc. These reports are prepared for specific people. Specific लोगों के लिए specific reports होती है. कभी कभी आपको कुछ डेटा देते हैं एग्जाम में और आपको उसको कंपेयर करना होता है या उसके ऊपर एक राइटअप लिखना होता है. दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट राइटिंग. Now, what are the salient features of a report? The facts contained in the report must be correct. These facts should be given in a proper order. If an event is being reported, it is important to mention the data and the date and the time of the event. Reports carry headings. Reports carry the name of the writer. Since a report is a formal piece of writing, it must contain only relevant details and should be in a formal style. Again, report writing formal है. फिर अभी हमने क्या किया, ये नोटिस राइटिंग वो भी फॉर्मल है. ज़्यादातर फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग ही अडॉप्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर इनफॉर्मल लेटर्स जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिखते हो, उसके अंदर आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. बाकी ये सारे डिटेल्स में आपको फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, राइट. नाउ रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली हाउ रिपोर्ट्स आर रिटन. CM's home opens to school children. Navya Sethi, who is the writer? Navya Sethi, Delhi, October 5, 2020. The official residence of the Chief Minister of Delhi will soon be formally open to school children for 1 hour every Tuesday and Friday. This unusual gesture has been made by the Chief Minister to make the children familiar with a wide variety of flora and fauna. Flora and fauna आपको पता होगा, आपने सीखा है शायद SSO में, साइंस में, दोनों में. Flora means the plants and fauna means the animals. Available in and around Delhi. The Chief Minister has also got a cabin converted into an activity room for the children. Here they will be provided information about various species. Once in a while, the Chief Minister will also interact with the children. A booklet containing relevant information about the various plant and animal species that can be seen in the Chief Minister's residence can also be prepared. It has also been prepared. It includes interesting information about such trees as fishtail palm, mulberry bottle bush, the kadamba. A small pond has been created in the garden to enable the children to study the ecosystem. At least 59 species of birds can be spotted near the pond, right? So the garden is very big, and that is because of that there is a lot of flora and fauna around. So to study that, the Chief Minister has allowed the entry of children into his residence. Now, talent hunt at Vishal Bharti. Anurag Tomar is the writer of the report. Jabalpur, October 28, 2020. On October 27th October, the last Saturday of the month, Vishal Bharti Public School, Jabalpur, organized a poster and slogan writing competition. The competition was open to the students of class 6 to 10. Posters were to be made on global warming, don't deny children their childhood, say no to child labor, or Jago Grahak Jago. Slogans were invited on junk food, grow more trees, and cracker free Diwali. Besides unearthing मतलब खोदना, अर्थ को निकालना, that is unearthing promising talent, right? जिसका talent छुपा है उसको बाहर निकालना. The occasion provided a good opportunity to the participants to display their creativity and their concern for issues of
great social importance, right? Issues like global warming, जागो ग्राहक जागो, मतलब ग्राहक के क्या जो राइट्स है उनको अवेयर नहीं होते कुछ ग्राहक, तो उसके लिए दैट इज कंज्यूमरिज्म, राइट? Okay, now we move on to the exercise. There are two things given. Book week was celebrated in our school recently. Contests were held on writing poems and stories. A special spellathon was organized for classes 5 to 8. There was a special 2-hour session in which students from classes 9th and 10th, 11th and some staff members presented reviews of the books recently read by them. Several renowned publishers displayed their popular titles. Write a brief report on your school magazine. ये 100 to 125 वर्ड्स ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट? इसमें आप बुक फेयर दिया हुआ है, आप फन फेयर जो आपके स्कूल में हुआ था जिसमें आपने पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया है, राइट, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो. अगर बुक फेयर के बारे में लिखना है, बुक वीक के बारे में, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट सेम टॉपिक आप फन फेयर पे भी लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, यू हैव फेल्ट इट, राइट? सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट इट. सो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, जो भी डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी पता है. सो यू मे चेंज द टॉपिक टू दैट. आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क फॉर दिवाली. So write one topic only. I am not giving the other one, right? Anyone can be asked in exams. Now we stop here today. This is your homework for Diwali. Complete all your homework in your grammar notebook only. No need to make separate notebooks, right? And happy Diwali to you all. We stop here today.